Every next level of life will demand a different version of you. So keep upgrading yourself. वरना पुराने मोबाइल वाली हालत हो जाएगी, लोग डिस्कार्ड कर देंगे आपको, आप स्वयं भी अपने आप को डिस्कार्ड कर देंगे। आज मैंने मंथन में एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित किया है जो बचपन से ही इस रूल को फॉलो कर रही है। यानी बहुत छोटी उम्र से ही उनके अंदर एक ऐसा गुण है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो बड़ी होंगी ना, तब तक दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगी वो। आज मैंने आमंत्रित किया है एक 13 साल की लड़की को, जिनका नाम है नायशा श्रीवास्तव। वो एक टीन एजर हैं। टीन एज में आपको पता है कि हम सबकी ना बहुत सारी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी अपनी समस्याएं ही बहुत सारी होती हैं। हमें लगता है कि ये जो समस्याएं हैं इनका आंसर हमें कैसे मिलेगा, लेकिन इस स्टेज में वो बाकी टीनेजर्स के लिए एक मिसाल बन गई है। वो एक एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने एक अपने हिसाब से उन्होंने एक टीनेजर ब्रांड स्थापित किया है जो कि टीनेजर्स के लिए है, गर्ल्स ओनली। और उन्होंने एक ऐसा ग्रुप भी डिज़ाइन किया है जिसमें टीनेजर्स जो हैं वो आपस में अपनी समस्याओं को लेकर बात करते हैं, ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, फैशन के बारे में, और उसके बाद फिर वो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, और साथ में टिप देने के लिए भी टीनेजर्स ही होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी एक ऐसे बच्ची से मिलूंगी जिस बच्ची से मिलने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बच्चे से बात कर रही हूँ। एक फुल फ्लेज्ड एंटरप्रेन्योर से आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं उनको भेजती हूँ एक छोटा सा रिक्वेस्ट, उनसे हम बात करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो ना तो आप ज़रूर उनसे पूछिएगा। नायशा एक बार चेक कीजिएगा। हाँ। नमस्ते, वेलकम, हाय, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। नायशा, आपके बारे में बोलने के टाइम ना मुझे बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी, इसलिए क्योंकि जब मेरा टाइम था ना, जब मैं एक टीनेजर थी, तो मेरी अपनी ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मतलब छोटी छोटी बातें, और हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम कोई स्टार्टअप करेंगे, एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे। और आज इस स्टेज पे मैं बैठ के एक छोटी सी बच्ची, और वो भी एक एंटरप्रेन्योर से बात करने वाली हूँ। मतलब आई एम सो प्रिविलेज्ड टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक थैंक यू। यू फॉर एक्सेप्टिंग। ऑलवेज। अच्छा नाशा, पहले जो ये आपका गर्ल्स ओनली जो टैग आपने यूज किया है, ये आपने ऐसे क्यों किया? सिर्फ गर्ल्स ही टीनेजर थोड़े होती हैं, बॉयज भी तो टीनेज में आते हैं, उनके लिए कुछ नहीं सोचा? नहीं, because Insta पे like there's no platform for just teenage girls. Like there are like creepy guys and all of that, but there's nothing for like girls itself. Because guys, they have their group chat, they have their thing. Girls, they don't really have, like आपकी आवाज कट रही है। one second. Is it better now? या इट्स बेटर। Yeah, so girls don't really have a platform to talk on, and it's basically like a safe space from everybody else. ओह दैट्स सो गुड, दैट्स सो गुड। अच्छा, आपको लोग यंग एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं, कैसा लगता है आपको? I don't know, it's like it's very overwhelming at times, but it's nice. इट्स Like नाइस। I like it. It makes me feel very like I've done a lot by just 14. नाउ यू आर 14 राइट? Yeah, अच्छा, I recently turned आपने 13, यू स्टार्टेड व्हेन यू वर 13 इयर्स ओल्ड? 12 actually. I wasn't even a teenager. अच्छा, देन हाउ कम दिस स्टक इनटू योर माइंड कि मैं एक ब्रांड भी बना लूं जो कि ब्यूटी के बारे में, फैशन के बारे में हो, और लड़कियों के लिए एक ब्रांड हो टीनेजर्स के लिए, ये दिमाग में कैसे आया? So, pehle to I started off because I had this huge identity crisis. Like, my parents would tell me, "Oh, you're too young to do this. You can't do all this." And then other people will tell me, "You're too old to be doing this. You can't act like that. You're not a kid anymore." So I'm like, "I'm a kid. I'm not an adult. Like, what am I supposed to be?" So that's when I spoke to my friends about it, and they felt the same way. So that's how I basically got it all together. Like, I'm not the only one who feels that way, so I shouldn't like go through it alone. Like other people can stay with me and I can always be there for them.
आपको पता है ये वाली आइडेंटिटी क्राइसिस हम सबको थी जब हम भी छोटे थे ना। इवन वी हैड दिस प्रॉब्लम। हम ना जब मम्मी का क्रीम कभी यूज करो तो मम्मी कहती नहीं 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 अभी तुम बहुत छोटी हो ये नहीं लगाना। और स्किन तो सबकी होती है ना, बड़ा गुस्सा आता था, लगता था यार क्या है। मुझे लगता है कि यू हैव गिवन एन आंसर फॉर एवरी टीनेजर कि अच्छा क्या ब्रांड लॉन्च करना है। तो ये ब्रांड लॉन्च करने का आइडिया इसीलिए आया क्योंकि आपको लग रहा था कि मैं क्या करूं, हमारा कुछ अपना होना चाहिए। हाँ, बिकॉज मैंने देखा भी ऑनलाइन, बट यू लाइक टीनेजर्स के लिए देयर वाज नो लाइक स्किन का प्रोडक्ट स्पेसिफिकली इन हम्म। इंडिया. And then whenever I used my mom's product, she would be like, "No, Naisha, it's gonna ruin your skin." And I get it because हाँ। ingredients are like really strong for teenage skin and it could ruin it. So I don't want to do that either. So I thought I could just like make one that all teenagers could use, so they don't like end up ruining their skin. So you're using your products right now? No, we haven't launched yet, but like the manufacturing is going on. Who is supporting you in this? My dad. Oh, so sweet. अच्छा, how did you convince him for this? Because सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हम बात तो कर लेते हैं पर इन सब चीजों के लिए we need funds, we need somebody who could take care of everything है ना। इसका execution is a huge problem. तो इस सब में आपकी मदद पापा ने की है? Well, actually, it was sort of his idea too. Like, I was arguing with my mom. I'm like, Mama, why can't I use this? And he's like, Naisha, just make something of your own. Like, he knows I'm not going to do it. So I'm like, oh, let me just do it and I'll show it to him. And then he really supported me through all of it. Like, he really वाह। do something big. ना व्हाट अबाउट मॉम, मम्मी को क्या लगता है कि मैंने अच्छा किया या गलत किया? अब तो न्याशा को मेरी जरूरत ही नहीं है, न्याशा के पास तो उसका अपना ब्रांड हो गया है। She's very proud. She's actually very happy. सर आप जैसे बच्चे को देख करके तो पेरेंट्स को बहुत खुशी और बहुत फक्र महसूस होता होगा कि आपने इसको चैलेंज की तरह लिया, राइट, एंड यू मेड समथिंग ऑफ योर ओन। कुछ चैलेंजेस भी आए हैं क्या इन सब चीजों को करने में? Yeah, like, pehle to I couldn't, like, I didn't have a team. So what happened was my dad would buy me books on skincare and I would read those. And then I would make notes and then I don't know what to do with the notes and all that. So I just didn't know how to go all about it. But later we got people in. We have this really nice team. They're really helpful. Like through everything, they're like really helping me. दैट्स गुड। आपके जो फ्रेंड्स हैं, द टीममेट्स दैट यू आर हैविंग, यू ऑल आर ऑन द अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो, जो गर्ल्स ओनली आपका पूरा ग्रुप है वेयर यू टॉक अबाउट, है ना? तो वो जो ग्रुप है उसमें क्या आपके पास कोई काउंसलर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं या यू पीपल हेल्प ईच अदर्स? बिकॉज अभी तो सारे ही टीनेजर है ना उस ग्रुप में। तो हमारे अभी इंस्टा पे गोड ग्रुप्स है, गर्ल्स ओनली एम्बेसडर टीम, एंड उसमें दे टॉक like to themselves, like to each other, and there's like no adult because adults are like they have their opinions, but because of the generation difference also they won't always get it, and they might just get angry or like you can't do this, not advice. काश आप मेरे जनरेशन में पैदा हुई होती, मजा आ जाता, यू नो। आई वुड हैव बीन हैप्पी टू बी देयर विद यू। इट्स सो लवली। हमारे पेरेंट्स जनरेशन गैप हमेशा रहता है, इट्स ऑलवेज देयर। तो अभी जो आपका ग्रुप है उसमें अगर जैसे आप लोग मेंटल इश्यूज के ऊपर भी बात करते हैं, टीनेज में बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं विच यू कैन नॉट डिस्कस विद एनीबडी। और कई बार ऐसा होता है कि मतलब जैसे अगर आप एक टीनेजर है, मैं एक टीनेजर हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मुझे पूरी नॉलेज हो। मैं भी कहीं गूगल से कहीं किताब से पढ़ करके मे बी आई कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली, है ना? तो कई बार ऐसा आपको लगा नहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं वी आर कंक्लूडिंग ऑन अ रॉन्ग पॉइंट, वी नीड टू हैव somebody who's mature enough to give us the right direction? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? So people message us talking about their problems and we do reply. But हम्म। I feel like even if we do like any, and it's not just one person's opinion, many हम्म। people, and we're not forcing it upon them. Like they get to decide what they want to do. Plus, I think you learn a lot from mistakes. Like if you make a mistake, you know you won't do it again. But if somebody just keeps telling you what to do and go the right way, and then something goes wrong, you'll be like, oh my god, why did I do this? Oh, that's really nice. अच्छा,
आपका जो ग्रुप है, इट्स ऑन इंस्टाग्राम, इट्स ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एंड एज यू नो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज, आई मीन स्पेशली girls have been bullied or Yeah. kind of tortured by the male gang always. तो आपके ग्रुप को भी क्या कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा कि आपको लगा कि वी शुड टेक अ लीगल एक्शन नाउ, या फिर कुछ तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि ये रोग, दे शुड कीप अवे फ्रॉम अस? So, there is nothing you can do because it's like a never ending cycle. Like, you can't just stop it. But, we do like, there are many people who have messaged us about all this. And we're like, yeah, I get it. Even like on my account, there are so many like these old guys. And I don't even हाँ. get it. But like, it's a never ending cycle. Like, if we try to stop it, it's never going to get stopped, but we could always just take action towards it. Ah, that's nice. See, you're inspiring so many people. You Oh, inspire me so much. It's Ash, she's writing. और ऊपर भी बहुत से लोगों ने लिखा है. तो it's so good कि आपकी वजह से बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है. And you have been, I think, a source of inspiration for so many people. तो जो लड़की दुनिया को इंस्पायर करती है, उसको कौन इंस्पायर करता है? my parents only. Like they've come a really long way. Like before they were just like this one small office, and now they have branches everywhere. They have so many businesses, and the amount of time they put towards it, it's crazy. हाँ. Yeah. तो उसका मतलब आप उन्हें देख के उनकी तरह ही मेहनत कर रही हैं, एंड यू वांट टू बी लाइक देम. Yeah. लेकिन उन्होंने भी आपकी एज में तो कुछ नहीं किया होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, है ना? यू आर दी ओनली वन. तो मम्मी पापा को तो और भी फक्र महसूस होता होगा कि हमने जो नहीं किया हमारे बचपन में, हमारी नाशा ने कर दिया उसे. Huh, but then they also feel bad sometimes. Like I'm like small and they're like, Naisha, you're doing so much, Naisha. Like, it's like pressure. So they're like, Naisha, you can stop anytime you want. Naisha, we're always there for you. You don't have to worry about anything. And I'm like, I want to do this. दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस. आपके ऊपर प्रेशर रहता ही होगा, जैसे अभी यू जस्ट स्पोक अबाउट द प्रेशर. हाउ डू यू पर्सनली हैंडल योर प्रेशर? बाकियों का तो हम फिर भी सजेशन दे सकते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हाउ डू यू हैंडल इट, हाउ डू कम आउट ऑफ इट? I just take days off. Like I'll just like cancel everything one day. I won't go out. I won't like attend tuition. I'll just sleep the whole day and the next day I'm like full of energy and I'm like back at it. हाँ, दैट्स गुड. अच्छा, अभी आप नाइन्थ स्टैंडर्ड में हैं, Hmm. है ना? पढ़ाई का प्रेशर भी एक तरफ है. पढ़ाई का प्रेशर भी बहुत जरूरी है, बिकॉज आप बिजनेस कर रही हैं तो साथ में डिग्री, एजुकेशन, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. हाउ डू यू मैनेज दीज टू फ्रंट्स टुगेदर? ऐसा तो नहीं पढ़ाई खत्म हो रही है, नहीं मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ऐसा तो कुछ नहीं? नहीं नहीं, वो रात को पढ़ाई करती हूँ. रात को आई थिंक सबसे ज्यादा फोकस होता है. So it's easier for me to study because everybody is asleep and I know nobody's gonna disturb me. So jaldi se I finish it like रात को 1 and it's done. Ah, that's good. अच्छा, how do your teachers and your friends take you as एक एक एंटरप्रेन्योर की तरह लेते हैं, या एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं, और टीचर्स आपको नॉर्मल एक स्टूडेंट की तरह अपने पास एक्सेप्ट करके रखते हैं? Some teachers are like really like they treat me like differently. Like my economics sir in school, he's really nice to me. He keeps asking about my business and what all I'm doing. Then he gives me advice. It's really sweet. My friends just treat me the same. कुछ एक अलग ऐसे बिजनेस वुमन वाली फीलिंग नहीं देते आपके फ्रेंड्स आपको, राइट? Kabhi kabhi, like if we're talking about it, they'll be like, Naisha, how are you doing this? I can't even like study properly. How are you like handling so many things? And I'm like, I don't know. ओह वाह. अरे कृषि लिख रहे हैं, नाशा जस्ट वेंट टू नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर फॉर अ कोर्स. वाह, स्कूल There ने was आपको भेजा था? व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, प्लीज बताइए ना. So we had like there were 6 days and there were 6 different topics every day. Like the best teachers from that school would come and teach us about like marketing, crypto, and all of that. So you went to do that and the school sent you for this? Yeah, like many people, not many, but like 10, 15 people came and we went with Wow, one sir and it was really nice. beautiful. तो ऐसे मम्मी डैडी के बिना वहां जा करके पढ़ना, was it a fun?
मतलब इट वाज एजुकेशन एंड फन या बहुत फन? बहुत fun. इट वाज बहुत फन। We went out so much. वाह। अच्छा, नो व्हाट यू वांट टू बिकम, जैसे अभी तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, ये आपका Yeah. अभी का प्रेजेंट है, पर फ्यूचर में आपने क्या सोचा हुआ है कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लानिंग्स, आप क्या करना चाहते हैं? Honestly, I have no idea. Like, I want to like grow with the girls only skincare makeup thing, but I don't want to like stick to one thing. Like, I want to have like other businesses on hand. But I love this skincare thing, and I'm not like leaving it. दैट्स गुड। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जब आप टीन एज से बाहर निकल जाएंगे तो आपके इस ग्रुप का क्या होगा, कौन संभालेगा इसे? विल यू स्टिल टेक केयर ऑफ इट? I feel like by that time, I want the girls in the girls only group to take care of each other. Like I don't always have to be there to guide them or to like make conversation. Like they should just come on their own and just talk and help each other with everything. जरूर। अच्छा, आप देखने में बहुत प्यारी सी हैं, है ना, इस एज में, इस स्टेज में। जब लड़कियां होती हैं तो हमेशा अपने आप को सोचते हैं कि लेट मी बी एन एक्ट्रेस। यू स्टे इन मुंबई ऑल्सो, तो कभी ऐसा मन में हुआ कि लेट मी बिकम अ मॉडल, लेट मी बिकम एन एक्ट्रेस, आई एम सो गुड लुकिंग, ऐसा कभी सोचा आपने? But mama papa wanted me to become a model like long back, and I'm scared of like the camera. I get really anxious in front of it. Like right now I've like grown a lot, so I'm okay right now, but before I was really anxious. हाँ, लेकिन ऐसा फ्यूचर में हो सकता है ना कि न्याशा सोचे कि ठीक है, करके देखते हैं, है ना? Maybe. You just think about it. You actually have got a beautiful face. Thank you. Yeah, you can actually think about this as going, मतलब एक साथ साथ वाला करियर के रूप में आप देख सकते हैं। You can be a brand ambassador of your own brands। और क्या चाहिए, क्या जरूरत है किसी मॉडल को हायर करने I, की? You will be there। You're doing that right now? yeah. Like I want to That's be the face of my brand, but also like get other girls with me, of course. sure, that will happen। अच्छा, कोई ऐसा ड्रीम है जो आप चाहते हो कि वो फुलफिल हो जाए? Um, I just want girls only to become like really big, and I don't want like girls to like think they're like going through everything alone, or they don't have anybody with them and they can't like talk about anything, and they have to be embarrassed about everything they do, and always feel like they're getting stared at, like everybody's just looking at them. I don't want them to feel that way, and if they ever do, I want other girls to just talk to them and be there for them, because right now, like everybody right now, every teenager right now, they are usually like really fake to each other, but they feel like it's like something cool to do, but it's not, and I want them to understand that. लवली, लवली। अच्छा, किरण मैम कह रही हैं कि मैम हम भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अब आप इन्हें इंग्लिश सिखा दीजिए। She's someone who's known to you? No. नहीं, अच्छा ठीक है। अच्छा, नाशा, आप जिस स्टेज में हैं, इस Hmm. स्टेज में ना प्रेशर बहुत अलग अलग किस्म से पड़ते हैं, है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि हम अब छोड़ दे रहे हैं, जो हम कर रहे हैं अब हम आगे नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इम्बैलेंसेस होते हैं, तो बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, वैसी वाली फीलिंग आती है ना, डेड एंड लगता है कि खत्म, अब कुछ नहीं होगा इसके आगे। जब ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आता है तो उस वक्त बाउंस बैक करने के लिए what do you say to yourself? Do you have some lines that motivate you? You read something that motivates you? क्या करते हैं आप? So whenever I like do something or start something, before that I write paragraphs on why I started. Like it's on my phone, it's on my notes. So whenever I'm like, oh, I can't do this anymore, it's not. That's when I like read it and I look back and I'm like, what? Like I was clearly thinking about something. It is gonna be something one day. So no point in like leaving it right now. ब्यूटीफुल। आपने एक बहुत प्यारी सी सीख दे दी, हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, है ना? बिफोर स्टार्टिंग समथिंग वी शुड राइट कि हम क्यों इसे करना चाहते हैं, देन Yeah, नोबडी विल क्विट।
Yeah. That's lovely. अच्छा, कोई ऐसा मैसेज है जो आप हम बड़ों को देना चाहें एज अ टीनेजर? Um, it's there's so much. Like I there. I would love to listen from you. बहुत सारी चीजें, क्या क्या हमें करना चाहिए? Please tell us. Okay, like to your kid or other teenagers? नहीं, पहले तो पेरेंट्स को ही पता होना चाहिए ना कि टीनेजर चाहता क्या है। हम तो अपनी मर्जी की बात थोपते हैं ना। Okay, so before doing or saying anything, look at it from like the teenager's point of view first. Like you are not always correct. पापा सुन रहे हैं, पापा सुन रहे हैं। हाँ, और And like before saying anything, you should always just think about what the other person is thinking first and just go through it all. Like don't just think about yourself. Like even with normal teenagers also, that's what they usually do. Like they're just like very self-centered, and it's supposed to be that way, but think about how it's going to impact other people also. हाँ, आपकी ममा इज ऑल्सो देयर, शी सेज आई लव यू डॉटर। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मम्मी पापा दे आर सो ग्लैड टू हैव यू, एंड इट्स एक्चुअली माय प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम बच्चों को सिर्फ सलाह देते हैं, वी कीप गाइडिंग देम थिंकिंग दैट वी हैव लेड अ लॉट ऑफ hurdles in our life, we have been through so many things, so we have got so much of experience that we can share it with you. पर एक टीनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कभी शायद ये सोचने की जरूरत महसूस नहीं की कि यू नीड योर ओन स्पेस टू ग्रो, है ना? यू Yeah. नीड अ स्पेस टू ग्रो, और हर बार हमारी इंटरफेरेंस इन योर लाइफ डजंट मेक सेंस। Because the generation gap is always just there. So it is like things are way different now, and it just doesn't work the same. And plus mistakes, you have to make your own to learn. ब्यूटीफुल। सबसे अच्छी बात पता है क्या? जब आप बड़े होंगे ना, तो आप जो भी बनेंगे, आपके हाथ में वो अथॉरिटी होगी और एक्सेप्टेंस होगा कि जो भी कुछ किया ना, वो मैंने किया। आई डिड दिस, सो आई एम दिस नाउ। ब्यूटीफुल। नायशा, आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया है। चलते चलते अपने जितने भी टीनेजर फ्रेंड्स हैं, जो लोग बाद में इसे देखेंगे, उनके लिए कोई टिप है तो जरूर दीजिए। Just don't change yourself for anybody and like people around you. Like just stay whoever you are. Don't like care about what other people think. It's okay. Everybody's weird in their own way. दैट्स गुड। दैट्स Yeah. सो सो लवली। नैशा, आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया, बहुत आप इंस्पायरिंग हैं। इसी तरह से आप खूब सारा अच्छा काम करते रहिए, और मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, और आपका नाम तो रोशन है ही है। वो होता ही रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। कीप Thank, रॉकिंग, कीप शाइनिंग। गॉड ब्लेस यू। thank you. टेक केयर। Bye bye. बाय।